presents Game on Hay, post-match of Game 2 of the ICC T20 Cricket World Cup. Of course, we had our second game of the season. It was the West Indies at home in Guyana for the first time taking on Papua New Guinea. First time we've seen them in a World Cup, and well, we all thought it would have been a one-way affair to the West Indies, but didn't the Papua New Guineans give them something to think about? It was a wonderful effort from the men from my side of the world, but in the end it was the West Indies who had a comfortable win, doing it in the 19th over, chasing down 137 they needed on the board. I got my expert panel to chat through all of the ins and outs of that game, and of course my wonderful co-host Rohat Nadeem. We welcome back Martin Guptill, Yunus Khan and the Professor Mohammed Hafiz. Guppy, my goodness, like, they actually really tested the West Indians today. Papua New Guineans, Vala, the captain, said he probably thought they were 10 to 15 runs short. If they'd had those 10 to 15, how interesting would it have been? It would have made it a completely different game, I feel. You know, they showed great fight throughout, especially in the field. You know, they never gave up. West Indies obviously known for having big hitters, big power. They just really took that away from them today, and you know, put in a great show. And you know, the rest of the teams in that group have got to watch out, because you know, they could really tip someone over if they keep playing the way they have today. Right, Guppy, let's start off with that prediction. How spot on was that? 134 you predicted, right? 137. 137, yeah. so just by one run, but almost there. Bang on. Yeah, oh, I mean, it's a great guess, wasn't it? I'll Well, take you it were close, weren't you, until that no ball at the very end, Hafiz? I thought you had it. Still at the end, it will be count 136, so I will go whatever Great comes job. in your way, you take it. But I think Hafiz won the prediction round in the first show. Guppy takes it tonight. But let's move forward. बहुत कुछ हमने यूनुस प्रिडिक्ट किया या हमने एनालाइज करने की कोशिश की थी प्री मैच शो में अपने कि कैसे परफॉर्म करेंगी दोनों टीम्स, और वेस्ट इंडीज़ ने हमने उनके बारे में यही बात की थी कि नेट रन रेट को काफ़ी माइंड में रखते हुए शायद वो ये चेज़ करेंगे, लेकिन एंड तक वो रन बॉल ही बन गई सिचुएशन. डू यू थिंक उनको थोड़ा अर्ली ऑन इस चेज़ को कंप्लीट करना चाहिए था? वो कर सकते थे वो लोग, लेकिन जैसे पहला गेम होता है तो सबसे सेफ क्या होता है कि आप पहला मैच जीतो, अकाउंट अपना खोलें, उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है, क्योंकि यू नेवर नो कि आगे क्या होना है. पहले अपने गेम्स तो अगर ये स्ट्रेट अवे हर गेम जीतते हैं तो ये वैसे ही क्वालिफाई कर लेंगे. एक्सपेक्टेशन हमारी ये नहीं थी, हम ही समझ रहे थे कि 5-6 ओवर पहले मैच ख़त्म हो जाएगा, और जिस तरह वो टॉस जीत के उन्होंने एक एडवांटेज शुरू में तो लिया, लेकिन मुझे लगता है कि 20 से 25 रन ज़्यादा करवा दिए. और चलो, लेकिन एक सेंस में ये भी अच्छा होता है कि आपके बॉलर्स को पूरी बॉलिंग मिल गई, लेकिन ये कि आगे जाके इनको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्टार्टर लेते हैं, अगर मैं उनके दो बैटर्स की बात करूं, किंग की बात करूं, फिर निकोलस पूरन की बात करूं तो इनको चाहिए कि ये अगर जब आप 30-30, 40-40 रन कर जाते हैं तो उसके बाद आप इसको फिनिशिंग पूरी करके आएँ, क्योंकि अगर इस तरह आप करोगे तो क्रंच मैचेस में फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन जैसे PNG ने ज़बरदस्त फाइट की है, हम ये हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे यही थी कि वो ऐसा नहीं बिल्कुल इजी वेस्ट इंडीज़ को जीतने देंगे, और वही एग्जैक्टली हुआ. कहीं से अगर 15-20 रन और होते तो हो सकता था कि PNG जो है ये मैच और क्लोज़ करती, लेकिन जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीतेगी, वैसे हुआ. लेकिन ये कि और अच्छा बेहतर कर सकते थे. लेकिन अच्छी बात है कि उनके पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं, तो जब आपके पास पॉइंट्स होते हैं तो एटलीस्ट आप अपना वो डे फिनिश करते हो, वो अच्छे नोट पे करते हो. तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ के पास ये आज का जो मैच उन्होंने फिनिश किया वो अच्छे नोट पे फिनिश किया. एंड क्रेडिट टू PNG, आई मीन दे मेड अ मैच आउट ऑफ दिस, राइट? आई मीन पहले बैटिंग में 3 विकेट्स पावर प्ले में उन्होंने लूज़ की, लेकिन फिर आखिरी 10 ओवर्स में जो रिकवरी उन्होंने दिखाई, ये टोटल भी एक पॉइंट पे हफीज़ नहीं लग रहा था कि ऑन द बोर्ड आएगा. देखें, एक स्पिरिटेड एफर्ट थी फ्रॉम PNG. जैसे हमने बात की थी कि एक मोमेंटम के साथ वो इस टूर्नामेंट में आए, एक आपके पास एक्सपेक्टेशन का बहुत ज़्यादा लोड नहीं है इनके ऊपर, इन्होंने सिर्फ इंजॉय करना है. एंड आई थिंक आज अगर हम देखें तो PNG ने बहुत अच्छा शो पुट ऑन किया, लेकिन आई एम नॉट इम्प्रेस विद द अप्रोच ऑफ वेस्ट इंडीज़ एट द मोमेंट. कॉशियस विन है, बहुत टिमिड परफॉर्मेंस है फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ साइड, क्योंकि जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, पहले तो टॉस जीतने के बाद उनका एक बड़ा कंट्रोल्ड करने वाला जो होता है ना, आप बोल्ड डिसीजन लेते हैं, आप अपने आप को मुश्किल हालात में डालते हैं, और फिर आप उसमें शो करते हैं दैट वाई वी आर कंसिडरिंग आवरसेल्फ वन ऑफ द होस्ट, वन ऑफ द चैम्पियन टीम. लेकिन उन्होंने आज वैसा नहीं खेला, डर के खेले. थोड़ा सा मुझे दिखने को मज़ा नहीं आया जैसे मैं सोच रहा था. नो मैटर, अगर आपने 137 भी चेज़ करना है तो आप में डोमिनेंस नज़र आनी चाहिए.
वो ऐसा लग रहा था कि दे वर ट्राइंग टू विन इट जस्ट फॉर अ विन, लेकिन वो जो मकसद था दैट दे वांटेड टू हैव दैट एक्स्ट्रा नेट रन रेट points within their pocket, they couldn't get that. Yeah, the intent wasn't there. You were speaking about that in the green room as we were watching. You were so surprised that they didn't try and finish things quickly, given how important net run rate would be in a group that is one of the more difficult groups. But let's take a little look at the match summary and remind ourselves of the story of the game. Well, PNG, they were sent in to bat and they managed to post 136 for 8. And when we saw Tony Ura get out early, we all thought, oh goodness, we could be in for an early night here, given he's been the bulk run scorer for PNG. But Sesi Bao, a beautiful 50 from him in trying circumstances after losing 3 wickets in the power play was exceptional. And then it was that late middle order of Dorigo, Vallo and Amini that got them to that 136 for 8 score, which ended up being quite competitive. In reply, there was, Chase, he was fantastic, 42 for 27 for him. Brandon King as well, 34. But there were some beautiful bowling efforts as well. And a special mention to Carrico for that 1 for 17 off 4 overs. He was fantastic with the ball. So much dot ball pressure. And yes, it was a 5-wicket win to the West Indies, but it really took it to the, they really pushed the West Indies very early on. And, Hafiz, it was a really wonderful effort from the boys up front, and had they gotten those extra 10 to 15 runs, it could have been a very different story. Well, to be very honest, every time the team lose the game, they always talk about those 15 and 20 runs. But I'm in a different understanding of the game, because I believe everything is in your hand. Whatever you got, you have to defend that. So I personally feel they did it well. It was a very spirited performance from them. They should be proud of themselves. They should keep their chin up, and I think they shown to the world like we are here for a right reason, and we are here for a showcase our talent to the people. Like we are here and we want to win. Even a one game, this game could have been a different story. Like at one stage they were 97, 94 for 5 somewhere, and then Russell and Chase, obviously Ross and Chase did it well for West Indies, but it could have been a different story if one more wicket lost. Maybe Andre Russell or Ross and Chase, it could have been a different story. But I still believe they shown a very good show today. Absolutely. At one point they needed 31 of just 18 balls, and things would get a little bit sticky until Roston Chase came in and just truly took the game and broke the back of that scoreboard run chase. He didn't just let Andre Russell do it, he took it upon himself to do it as the set batsman, and that was really impressive. Yeah, that he's a very gutsy player. Like whenever you watched him, you don't personally, sometimes you feel he's not a white ball player, but the tactics he has, he knew that how he has to score in a different condition. Wherever he go, whatever opportunity get, he maximize it. And especially in the West Indies team, that middle period, you need the batter like that. He score just run a ball, and sometimes they just build that partnership in between the batter, especially the big hitters. So I think it is a good move from the West Indies supporting staff, that they need that batter who plays for like 30 or 40 balls and he score like 50 or 60, because West Indies need that kind of a player in between that center. Someone to hold the innings together. Hold the innings, they love to hit boundaries, and they sometimes forget that ones are just as good as boundaries sometimes, especially on difficult wickets in the Caribbean when it is tough to start. You can't just go out and blast boundaries straight away. To be able to get in, rotate the strike and work with their partner at the other end to create a partnership, that's just as important as trying to go out and blast sixes from ball one. बिल्कुल. हाँ, मिडिल ऑर्डर के ऊपर भी परफॉर्मेंस की आपने बात की ना कि फिनिश करने के लिए जाना चाहिए मैचेस को. टॉप ऑफ द ऑर्डर ब्रैंडन किंग की इनिंग्स को आप कैसे देखते हैं, स्पेशली सिंस दूसरे एंड पे जब विकेट गिरी, प्रेशर एकदम से आया वेस्ट इंडीज पे, बट देन उनकी इनिंग्स ने, डू यू थिंक ही कुड हैव प्लेड लॉन्गर इन द मिडल? मुझे लगता है कि वो निकोलस पूरन की वजह से थोड़ा सा स्टक हो गया, क्योंकि उससे पहले तो बहुत रिदम में खेल रहे थे, और वो उन बैटर्स में से आज लग रहे थे कि जिनके पास कमांड मौजूद था. द वे उन्होंने स्टार्ट किया, आउट हो रहे हैं लेकिन वो अपने एक मोमेंटम लेके बाउंड्रीज पे जा रहे हैं, और वो जो कहते हैं ना कि आप बिल्कुल फ्लो में खेल रहे हैं और उसके बाद
कि आप जाओगे और हर बॉल पे हिट करोगे, ठीक है अच्छा लगता है बाज़-औक़ात कि आपके पास बहुत सारी बाउंड्रीज़ हों, सिक्सेस हों, लेकिन बाद में ये होता है क्या है कि जब आपके पास अच्छी बॉलिंग आएगी और ख़ास तौर पे अच्छी फील्डिंग आएगी और अच्छे कैप्टन्स आएंगे, लीडर्स आएंगे, अच्छे बॉलर्स आएंगे, तो फिर वहाँ आपको लगेगा कि अब ऐसा नहीं होगा। वहाँ जब आप 160 भी आप चेस कर रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होंगे। तो मेरे ख्याल से ये अंडरस्टैंड तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम इनको चले एक एज दे देते हैं कि पहला मैच है, उसके बाद वरीज भी बाज़-औक़ात होती है कि 2-3 दिन से बारिश हो रही है, तो यू नेवर नो कि अब ठीक है होम कंडीशन तो है, पिच कैसे खेलेगी। तो वो जो आप टॉस जीत के थोड़ा सा बैक पे आए हो, लेकिन चलें उससे लर्न आप करें और मूव फॉरवर्ड करें। बिल्कुल हफीज़, यहीं पे हम ब्रैंडन किंग की जहां बात कर रहे हैं, एज एन ओपनर किस माइंडसेट से आप उतरते हैं इन द मिडल व्हेन यू नो पहला मैच है, वर्ल्ड कप है, आप चेस कर रहे हैं और सामने वाली टीम जो है दे हैव गॉट नथिंग टू लूज बट यूर द होम टीम, ऑल आइज आर ऑन यू। ब्रैंडन किंग की इनिंग्स को आप कैसे असेस करेंगे उसमें? मैं ब्रैंडन किंग को तब से जानता हूँ जब उसने अपने अंडर 19 लेवल पे खेल रहा था, और मैं बहुत हैरान हूँ, ये ब्रैंडन किंग ऐसा नहीं खेलता। इज़ अ वेरी एक्सप्लोसिव बैट्समैन, बहुत स्ट्रॉन्ग हिटर है, बहुत शानदार प्लेयर है। और अगर पिछले साल 1.5 साल में अगर आप ब्रैंडन किंग की इनिंग्सें देखेंगे, कहीं पे भी वो उसने इस तरह के स्ट्राइक रेट या इस तरह की इनिंग्स खेलने की कोशिश नहीं की। वही जो आप बात करते थोड़ा तो आज थोड़े टिमिड थे, एवरीवन वाज थिंकिंग समथिंग, नॉर्मली दे प्ले विद द फ्लेयर। इसीलिए वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत ज़्यादा डेंजरस समझी जाती है, और उनके अंदर वो जो हिटिंग एबिलिटी है वो तो हमेशा उनके साथ रहेगी, और उनका फ्लेयर हमेशा उनको दूसरों से अलग करता है। लेकिन आज ना हमें वो फ्लेयर नज़र आया, ना वो एक्सप्लोसिव पावर नज़र आई, क्योंकि ठीक है आप जीतोगे, लेकिन एज ए फ़ैन ऑफ क्रिकेट मैं कम से कम ये नहीं देखना चाहता था कि वेस्ट इंडीज़ इस तरीके का मैच खेले। हार जीत आई डोंट केयर अबाउट इट, बट आई रियली वांट वेस्ट इंडीज़ टू प्ले द वे दे प्ले। और अगर उन्होंने ये वाला कंट्रोल्ड करने वाली इनिंग्सें खेली या कोशिश की, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज हैव ओपनड देयर अकाउंट इन दिस वर्ल्ड कप विद अ विन एट देयर होम ग्राउंड। यहाँ पे एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे, बट डोंट गो एनीवेयर, लॉट्स on the other side only on Vantage Holdings presents Game On है। A very warm welcome back to Vantage Holdings presents Game On Hey, unpacking all of the action of the T20 World Cup. Of course, we just saw the West Indies, the hometown heroes. They got their first win. They opened their account with a big W against Papua New Guinea, but didn't the men in red put up a wonderful fight against the West Indies today? Papua New Guinea, 137 was what they needed to chase the West Indies, and Martin Guptill, didn't they make it difficult for them? Papua New Guinea bowlers, they did incredibly well to consistently take wickets, and you really make it difficult for the West Indians in the end. Yeah, they certainly did. They put a real good chokehold on, such a powerful team. They didn't allow them to get those big shots away too often, and it paid dividends. They took it right down to the wire for them to take it to the 19th over. I don't think many people were expecting that, and the West Indies just managed to squeak over the line thanks to Ross and Chase. Well, let's relive those wickets and as they fell, because when you lose Johnson Charles to a first ball duck, they gave themselves every opportunity, and it was just the cool header Ross and Chase that was the difference in the end. Right, PNG really punched above their weight, Hafiz, in this game. हमने पहले भी उनकी bowling की performance की भी बात की, but batting में that show from CC Bao, that 50, his 4th T20 50, एक ज़बरदस्त all-round performance from the team, but this man's knock made all the difference, and it truly showed us what PNG is capable of. देखें, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके जो 2 प्लेयर थे, जो उनके कप्तान हैं,
असद, वो कुछ अच्छा शो करेंगे क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स किए हुए थे। लेकिन इनके जो कंट्रोल किए इन्होंने इनिंग्स को, जब उनके मेन प्लेयर आउट हुए वहाँ पे ठीक है, हमें लग रहा है कि T20 वाली इनिंग्स नहीं थी, लेकिन एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऑफ द गेम के अंदर आए और अपने आप को वहाँ टाइम दिया और अपनी टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ लेके गए। लेकिन जब वो इस दूसरे डग आउट में गए हैं, इट ऑलवेज टफ, लेकिन एज ए ट्रू प्रोफेशनल उन्होंने इनके अंदर जो स्पिरिट पैदा की टू गो आउट देयर एंड गिव देयर 100%। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज़ है कि एज ए कोच, एज ए स्पोर्टिंग स्टाफ, एवरीवन मस्ट बी प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल, हमने यही बात की, ब्रैंडन किंग की इनिंग्स जिस तरह इम्पैक्टफुल रही उसी तरह पीएनजी की इनिंग्स। लेकिन डिफरेंस यूनस यहाँ पे ये है कि पीएनजी डोंट गेट टू प्ले अगेंस्ट क्वालिटी साइड्स, उनको इतनी प्रैक्टिस नहीं है, मैच प्रैक्टिस नहीं है कि क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट कैसे बैटिंग करनी है। बट आज की गेम में सीसी बाव के ये इनिंग्स देखे, एक डिसेंट अटैक था वेस्ट इंडीज़ का जिनको उन्होंने बड़ा अच्छी तरह टैकल किया और सिचुएशन के मुताबिक, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें होम कंडीशन है वेस्ट इंडीज़ की, उसके बाद 2 दफ़ा विन किया हुआ ये ट्रॉफ़ी, और फिर जिस कंडीशन में पीएनजी खेल रही है, बहुत सारे मुश्किलात हैं वहाँ पे। ये सब आपको ये सब फैक्टर होते हैं आपकी गेम में। तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त खेला उन्होंने। वही वाली बात है कि देखिए आपने इस स्टेज पे आके लर्न करना है, सीखना है, और फिर इसमें हम ये बात करते हैं कि आप एंजॉय करें। तो एंजॉय कैसे कर सकते हैं? एंजॉय ऐसे ही कर सकते हैं कि आप अब अच्छा क्रिकेट खेलें। अपना एंजॉय तभी कर सकते हैं जब आप अपना 100% दें, और जब मुश्किल कंडीशन में तो कोई खड़ा हो गया जी मैं करके आता हूँ, इसी तरह। तो मेरे ख्याल से यही वो पॉइंट्स है, जब आप यहाँ से जाओगे तो आप सीखते हो। और मैं पास में भी ऐसी बहुत सारी टीमें हैं जो कि इसी तरह बनती हैं। और फिर आप अपने आप को, जब हम आयरलैंड की बात कर लें, स्कॉटलैंड की बात कर लें, वो ये टीमें वैसी थी कि वो भी एक दफ़ा आती थी, क्वालिफाई करती थी। उसके बाद अगर हम बात कर लें, अफगानिस्तान की टीम की बात कर लें, तो ये सारे एसोसिएट्स की टीम है। और उसके बाद आज वो फिर जब उनको ये फॉर्मेट मिला तो उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस कर रही है और अपने नाम बना रही है। और प्लेयर आप ये देख लें, अब ये जितने भी प्लेयर्स खेलेंगे इनके लिए बहुत सारी फ्रेंचाइज क्रिकेट ओपन हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से यही वो स्टेज है कि जिसको मौका मिले वो परफॉर्म कर। और जिस तरह सीसी बाऊ खेले हैं, मेरे ख्याल से देखें यही पता चलता है कि प्लेयर की क्वालिटी क्या है। मेरे ख्याल से उनका इसी तरह अगर ये जो एसोसिएट टीम्स हैं ये परफॉर्म करें, उनके प्लेयर्स परफॉर्म करें और फाइट दें। और जब आप एक दफ़ा फाइट दोगे, दूसरी दफ़ा फाइट दोगे, तो तीसरी दफ़ा जो भी टीम आपके खिलाफ होगी, चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग हो, आप उनके खिलाफ विन करोगे। तो मेरे ख्याल से पीएनजी के लिए ये एक ठीक है, उनको वो पॉइंट्स नहीं मिले, लेकिन मोरली तो उन्होंने इतना ज़बरदस्त खेला है। और आप देखेंगे कि उनका जो नेक्स्ट मैचेस आएंगे बहुत अच्छा ये उनके लिए स्टेज है। और ऐसे प्लेयर जैसे सीसी बाव जैसे प्लेयर्स हैं, वो आएंगे, वो अपने एक्सप्रेस करेंगे, और फिर वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना, वर्ल्ड कप में अपना नाम कमाना, अपने कंट्री का नाम कमाना, उसकी तो फीलिंग ही कुछ और है। बिल्कुल, a lot of doors will open up for these PNG players through this World Cup, Erin. The way that they've played today, most of these players you will see them more often now. That's hoping we will see them more often now in franchise cricket. Oh, I hope so. I think it's a wonderful opportunity, and it's a day that CC Bow will remember for many reasons. Obviously, unlucky to not get the win, you may say, in many ways, that they were so close, and that win predictor was really swaying the way that they were bowling in that second innings. But in the end, it wasn't meant to be, but it was a really stoic effort from the Papua New Guineans, who had everything to play for and absolutely nothing to lose. Let's relive the first innings. Of course, they were sent into bat by the West Indians, and they ended up putting 136 for 8 on the board. Guppy, we'll go through those wickets, at the beginning. But Tony Ura, he's known for getting the bulk of the runs. When you lose him for only 2, I think it was a bit disaster signs for the Papua New Guineans. But despite losing 3 wickets in the power play, they went on to post what was a competitive total. Yeah, they certainly did. And when you're relying on just 1 or 2 batters to get the job done, it can send a bit of a shock through the rest of the team. But I think the way that the rest of them fought and actually found a way to start scoring runs on a slightly difficult wicket, they should be really proud of that and really happy that that they can go up against the bigger nations and put up some decent numbers and things. And moving forward in the tournament, hopefully they can get some better wickets to bat on, and then those guys who usually score the bulk of the runs can maybe get away, and then the rest of them can come in and actually just have a bit more fun and play some shots, and who knows, they might get to that 170, 180, which could be a winning score on a day, and then
look at how they bowled as well. That's fantastic work, and you know, they can definitely be able to defend that 170, 180 mark. And perhaps a few questions as well, Hafiz. I might get you to help me run through these wickets that did fall in the first innings of PNG as well. Playing against the giant of the T20 format, and he did a fantastic job for the team. And that dot ball pressure from a spinner, you would have liked that. या बिल्कुल देखें जहाँ हमने बात की थी कि स्पिनर जब आपके पास होते हैं और स्पिनर परफॉर्म करते हैं, जो मिडिल पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो यही जब स्पिनर आपके परफॉर्म कर रहे हो, स्पिनर ऐसे स्पिनर हो जो कि मिस्ट्री टाइप स्पिनर्स हों, जो कि आपको विकेट्स भी दें और आपको डॉट बॉल्स भी करके दें और गेम में रखें, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा साइन है। और यही बात हम बार बार कर रहे हैं कि स्पिनर्स को आपके ऑन होना है। तो जब स्पिनर अच्छा करते हैं तो आपके लिए एक टून सेट होती है, क्योंकि हम बात करें कि 6 ओवर के पहले की बात करो, आखिरी 5 ओवर की बात करें, तो ये 11 ओवर जब आप निकाल देते हो, तो फिर जो आखिरी के जो 9 ओवर बचते हैं जो मिडल के हैं, तो उसी में गेम जो है आप बनाते हो या आपसे निकल जाता है। तो मेरे ख्याल से बड़ा क्रिको की जिस तरह बॉलिंग की है, और ही इज़ ओनली आई थिंक 20 ईयर्स ओल्ड, सो इसका अमेजिंग इसका जो है वो फ्यूचर है। और जब इस तरह के यंगस्टर इस तरह की टीमों की तरफ से परफॉर्म करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इतने बड़े बिग स्टेज पर जैसे मैंने बार बार बात कर रहा हूँ, यही वो स्टेज होता है जब आपके नाम बनते हैं। तो ये बड़ा अच्छा साइन है इस क्रिकेट के लिए, और ख़ास तौर पर T20 के लिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है ज़रूर है कि ये यंग ब्लड का गेम है, तो जब यंगस्टर करते हैं तो बहुत खुशी होती है। So much to look forward to for so many of those PNG players. A wonderful effort, but in the end, of course, the West Indies, they take the chocolates, as we like to say, and get that W. Off to a very short break here on Vantage Holdings presents Game On. Hey, but stick with us because the World Cup, it keeps on going. We've got 2 games to preview for tomorrow. That's just on the other side. जी वेलकम बैक टू वांटेज होल्डिंग्स प्रेजेंट्स गेम ऑन है। ब्रेक से पहले ऑफ कोर्स हम बात कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पीएनजी के गेम के बारे में। वेस्ट इंडीज़ ने अपना अकाउंट खोल लिया जी इस वर्ल्ड कप में विद अ विन एट होम। दैट्स व्हाट दे नीडेड एग्जैक्टली। थोड़ा हमने इन डेप्थ एनालाइज किया दोनों टीम्स की गेम्स को, बड़ा क्लोज एंड तक गई है ये गेम। वेस्ट इंडीज़ ने पूरी कोशिश की, लेकिन वही बात है कि जो नेट रन रेट की बात हमने प्री शो में भी की थी, मे बी इस गेम में वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो सका फ्रॉम वेस्ट इंडीज़। लेकिन इससे यही साबित होता है कि कोई भी टीम जो है वो वीकर टीम नहीं है, स्पेशली इन द T20 फॉर्मेट। और इस वर्ल्ड कप में हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब जिस अगले मैच के बारे में हम बात करने वाले हैं, 2 टीम्स ऐसी हैं, एसोसिएट नेशंस हैं, बट दे पोज इक्वल थ्रेट टू ईच अदर। हफीज़, नामीबिया वर्सेस ओमान थोड़ी देर में ही जो है लाइव एक्शन PTV स्पोर्ट्स पे हम देखेंगे। बट दोनों टीम्स इंटरेस्टिंग है कि इक्वल लगते हैं स्ट्रेंथ्स में, वीकनेसेस में। रिसेंटली 5 मैच की T20 सीरीज़ इनकी हुई। नामीबिया ने हराया ओमान को 3-2। क्लोज कह सकते हैं आप इन दोनों का मैच होगा। और बाकी जो इनका ग्रुप है, ग्रुप बी में स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो एक आसान आगे वाले मैचेस तो होंगे नहीं। ये दोनों टीम्स के पास मौका है कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करें। देखिए दोनों टीमें ऐसी हैं, अगर आप बात करें तो नामीबिया ने थोड़ी ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है रिसेंट पास में। जो उनकी कामयाबियां रहीं 2021 के वर्ल्ड कप में वो आए, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो 2022 के अंदर वर्ल्ड कप T20 हुआ उसमें बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। तो मुझे लगता है कि उनके पास जो प्लेयर हैं वो इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ओमान की बात करें तो उन्होंने सिर्फ ओमान के अंदर जो क्रिकेट खेली वहाँ तक तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनको उनसे बाहर लेके जाया जाता है
तो वो कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं लेके आते। तो मुझे लगता है कि नमीबिया टू मी इज़ अ बेटर साइड, और वो एक ऐसी साइड है जो इस ग्रुप के अंदर एक ऐसा डार्क हॉर्स के तौर पर कंसिडर किया जा सकता है कि वो किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकती है। तो अगर वो ये मैच जीतते हैं, देखें जो मैचेस हैं, जो एसोसिएट टीम्स हैं, उनकी एक बर्तरी हासिल करना उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो एसोसिएट मेंबर्स से जीतें, क्योंकि वो उनको सुपीरियर करेगा फ्रॉम द अदर एसोसिएट टीम। तो मुझे लगता है कि नमीबिया, स्कॉटलैंड भी एक अच्छी टीम है, लेकिन नमीबिया मुझे लगता है कि इस पोल के अंदर अगर मैं तीसरी टीम कंसिडर करूं तो नमीबिया एक ऐसी टीम है जो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर शो पुट ऑन कर सकती है। बिल्कुल, द रीसेंट सक्सेस जो यूनिस इनकी हुई है, जिस तरह हम बात कर रहे थे, काफ़ी हेल्प करेगी, बिकॉज वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस होना ही एक तरह से साइकोलॉजिकली आपको बहुत हेल्प करता है व्हेन यू आर प्लेइंग दीज बिग टूर्नामेंट्स। और आगे ग्रुप के गेम्स उनके आसान नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं इन दो टीम्स को, बिकॉज नाउ दे विल बी फेसिंग ईच अदर इन बारबेडोस? बिल्कुल, और काफ़ी अरसे से आपस में ये मैचेस भी खेल रहे हैं और बार बार ये एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को इनका इलम है। और ख़ास तौर पे अगर मैं नमीबिया की बात तो डेविड वीजे वहाँ पे उसको लीड करते हैं वहाँ पे, और अक्सर हमने देखा है कि वो कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस अपनी करके और वो मैचेस जिताते हैं। तो उनको थोड़ा सा एज लगता है, और साथ में जिस तरह वो कंटिन्यूसली ये थर्ड टाइम आ रहे हैं खेलने के लिए वर्ल्ड कप में, तो ये उनका एक एज है जो कि उनको देख रहे हैं। और हमने देखा है उन्होंने जब भी उनके खिलाफ अच्छी टीमें आती हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं और क्लोज मैचेस होते हैं। तो नमीबिया को हम अब ये नहीं कह सकते हैं कि ठीक है वो एसोसिएट टीम तो लगती है हमें कि वो है, लेकिन ये कि वो अब एक रेगुलर मेंबर T20 फॉर्मेट की लग रही है। और जहाँ तक ओमान की बात है तो आकिब इलियास उनके लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं, बैट से भी बॉल से भी, लेकिन उनके लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस है। आई होप कि वो इससे अच्छा लर्न करें। जैसे PNG ने आज खेला, उन्होंने फाइट दिया, तो मेरे ख्याल से देखिए जो जितने भी जो मैं ये नहीं कहूँ कमज़ोर टीम है, क्योंकि T20 में कोई स्ट्रॉन्ग और कमज़ोर टीम नहीं होती। और आज हमने देखा कि अगर थोड़े से रन्स होते और एक दो आउट होते तो शायद वेस्ट इंडीज़ मुश्किल में होती। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मैच होने जा रहा है। नमीबिया का थोड़ा सा एज लग रहा है, लेकिन जो फॉर्मेट है वो T20 है। तो आई होप कि दोनों टीमें अपने पोटेंशियल पे खेलें और सिर्फ अपने लिए नहीं करेंगे बल्कि फैंस के लिए खेलें। जो अब हमने जैसे बात की वेस्ट इंडीज़ में जब जहाँ क्रिकेट होती है वेस्ट इंडीज़ में, तो एक सिर्फ ये क्रिकेट नहीं है, ये एक आप कह सकते हो एक फेस्टिवल होता है वहाँ पे। तो आई होप कि ये एक अच्छा मैच हो, और जो लोग देखने आए, जो फैंस देखने आए, और ख़ास तौर पे इन दोनों टीमों के फैंस बहुत दूर दूर से आए होंगे। आई होप कि एक अच्छा मैच हो, और जो हम चाह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के मैचेस होने चाहिए, ये सिर्फ एसोसिएट के मैच नहीं, वर्ल्ड कप का मैच हो जिसमें हाई रन्स होने चाहिए, जो कि जैसे हमने कल देखा मैच में USA के और कनाडा के मैच में, वो नहीं लगा कि ये कोई एसोसिएट टीम है, और लगा कि ये आए हैं यहाँ पे खेलने के लिए और जीतने के लिए। तो आई होप कि ये दोनों टीमें भी इसी स्पिरिट से खेलेंगी। And just one thing as well, one man that Namibia has, which we're all very familiar with here, of course, Murshid David Visa. Hafiz, you know him very well from Lahore Qalandars. Yeah. What does he bring to the side, other than obviously bulk runs, can bowl, and fantastic as a captain on the field? But, you know, how big is he in for Namibia? Well, I played with him, and personally I feel he's a true professional. He gives his 100%. Whatever opportunity he gets, he always try to maximize it. So I think it's a great addition to the Namibian side. From the last couple of years, I noticed the experience he brought into the side. He's moved around. Wherever team wants him, he's there to deliver it. So I believe like his addition into the team will definitely help them a lot. Yeah, well, that's our first game of the day. Namibia taking on Oman in the early hours of our morning. But the second game of the evening for us here in Pakistan is, of course, our first of Group D of the season. It's South Africa taking on Sri Lanka. And Martin Guptill, both sides haven't had the best T20 international form coming into this match, but you've got a lot of players in both sides who've been recently playing in the IPL and other franchise T20 leagues around the world. A lot of runs on the South African side and pace bowlers, and then you've also got the wily Sri Lankans, plenty of pace for them with Madhushanka, Padirana and the likes who can bowl 145 plus. Do you think it's an even contest tomorrow? Yeah, I think whoever wins this game tomorrow is probably going to top that pool, and you know both teams will want to be doing that. So it's going to be a pretty tight game. To be able to say who's going to win is pretty tough, but you know, having faced a few of these guys recently in different tournaments, you know, Dushmantha Chamera, you know, he seemed to have found his rhythm and his pace has come back up again, which is really pleasing to see. You also got guys, Pasaranga, a new captain for them now, hasn't played a lot lately, but
you know, when he is there, he's such a big catalyst for the Sri Lankan team. You know, his leg spin is unbelievably good, his control, and how he's able to, you know, control those middle overs with how he's bowling, and his batting has come a long way as well well. You know, he's a true all-rounder, strikes the ball beautifully, and is a key cog in the wheel of the Sri Lankan team. So, you know, for him to be back and firing is going to be massive for Sri Lanka. And then I think if you look at the South African side, they've had a few injuries of late, guys leaving the IPL, guys a little bit out of form, but you know, I think if you look, I think Quinton de Kock is going to be massive for them for going forward through the tournament. You know, if he can really fire up at the top of the order, score some runs, and take the pressure off the likes of Aiden Markram, Heinrich Klaasen, and Rassi He's been van der Dussen. unbelievable in He recent has, form. you know, Heinrich Klaasen striking he's been 171, crazy scoring in the runs last for fun. 2 years, isn't it? He's had a really good run, really good to see, and you know, they'll want him to really keep that form up as well, but you know, the guys at the top need to help him as well. He can't do it all himself, and they got obviously a left arm wrist spinner in Tabraiz Shamsi. You know, we don't see too many of them, but there's a few more coming through, and you know, he's been playing different leagues around the world, you know, on these wickets over in America and the Caribbean. You know, he could be a really key part to them as well, and you know, we're all hoping that Anrik Nokia can get back to his best and start bowling 150 again. Just glad I don't have to face him. And we're in New York as well, so you know, we've got another drop in wicket situation. We've heard in the warm-up matches that it was seaming for the quicks and it was stopping a little bit for the spinners, so it might be very interesting conditions as well, which will obviously play into the outcome of the game. Absolutely, a little bit of unknown. It's probably one of a toss that the batters are probably going, come on, let's bowl first and have a look what's happening. But look, whatever happens, you have to adapt pretty quickly. I mean, you know, if it is seaming around, it is seaming. You just have to deal with it and move on and find a way to get through. It is like you know, a short wide ball is still a short wide ball. You've got to try and hit it. If you're being too circumspect about the ball that's nipping around, you'll miss out on those scoring opportunities. So whoever bats first has just got to quickly adapt and find out what's happening and then go from there and adapt. Yeah, a lot to look forward to. It seems to be a very evenly poised matchup between obviously South Africa and Sri Lanka. That's our second game of the day tomorrow. But I'd like to hand out a little prize if you don't mind, Roha. Of course, we had our quiz section on the pre-match, which is why you must join us from the beginning of the day, because you may win one of these. So this is the winner of our J. Junaid Jamshed perfume winner, and I want to say congratulations to Saba. This is for you. We're going to be sending this to you. Thank you so much for answering that question perfectly well. I love when girls win on this show. I know. So please, if you're watching and if you're into cricket, if you know all those stats, if you know the answers to our questions, do call in, because you might have a chance to win a perfume. Little Wassi Makram 502, if you don't mind. Not too shabby. Congratulations, Saba. That's all we have time for now on Vantage Holdings presents Game On. Hey, Roha, wonderful work as always, and to our wonderful expert panel. So appreciate your time and that incredible insight. What a start, hey, to the T20 World Cup. Plenty more action to come. Of course, we'll be seeing you tomorrow from 5 p.m. live across the screens of PTV. But of course, you can catch every single game of this ICC T20 World Cup right here on PTV Sports. That's us for tonight, but we'll see you tomorrow.